Guys, we'll start in 2 minutes. Meanwhile, whoever was trying to log in and could not, this is the portal you have to go to. It's portal.azure.login. You could type or just Google search it. Ultimately, you'll be here. Click on sign in. I'm not sure if my internet is slow or the portal is slow today, but it is taking time. Can you guys hear me properly and see my screen? Yes, you're audible. Soil, are you sharing your screen? I don't see your screen. Yes, Miranda, I'm sharing my screen and I think I have sufficient
No, internet is not slow. Sonam, if you could see, it's a 90 Mbps speed I'm getting. So I think it's Azure portal which is slow today. Yes, Miranda, I'm sharing my screen. Are you not able to see it? No, I'll leave and I'll join back again then. Yes, please try that. Yes, internet is fine. I think the portal is slow, a bit slow today. But I think we don't require portal today. That's fine. We'll cover it up. We are waiting for a minute more and then we'll start. Do you guys have any questions meanwhile? Jafar bhai, are you getting the concepts? हाँ भाई. So I hope जो पिछली बार पिछले क्लास में आपने मिडिल से स्टार्ट किया था उसको और इसको कंबाइन करते हुए you think you are Yes. ready for the interviews now or you think it will take some more time? थोड़ा और टाइम चाहिए बट समझ कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं पूरे. Okay. What I would suggest you to attempt few interviews where you do not plan to work. I hope Okay. you understand what I'm trying to say. Yes, Like, yes, yes. it's for example, if I am in Pune and I'm targeting companies in Pune, so before I actually start for multinational companies and Pune's local companies, we will always start with companies which are located in Bangalore, Chennai, Hyderabad, where we do not intend to go. So even if you get rejected, that is fine. But we'll Right. discuss that this everything interview के sessions जब हम करेंगे technical के बाद when we create our interview sessions जहाँ पर Okay. आप लोगों को काम में समझाऊंगा, we'll discuss these things over there. You ठीक. are a part of that group, right? Mock call wala group. Yes, yes, yes. Irfan Yes. has cleared, Vinayak has cleared, so I hope you guys you will also clear very soon. So let's start. Sure. I think we have enough people now to start. Anyone has any questions, guys? Before I start with the next topic, do you guys have any questions on the topics which we covered till now or specifically yesterday? Anyone? Miranda, can you see my screen now? Before I could leave, I was able to see, but again now it's gone blank. Okay, I think you'll have to check your internet or maybe disconnect it once and try because you'll require screen. Today's explanation again, it is on theory and I'll be using MS Paint. तो screen जरूरी होगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा. So you could take a minute or so and please figure it out. What about others, guys? Are you able to understand it? Do you have any questions? किसी तरह का कोई doubt? Sumaya, what about you? Yes, Soil. Till now, it's clear to me. Okay, Vishal. Whatever concept you discussed. Vishal, Yogesh. I think Yogesh, it's clear for you. Still, if you have any doubts, please do ask. Khalid, I think it's clear for you. Henty. So anyone has any doubts, please do ask, guys. Do not wait कि ये topic हो जाएगा बाद में मैं पूछूंगा बाद में पूछूंगी. Do not do that because उसके base पे then आपको आगे की चीजें नहीं समझ में आएगी and then you start losing interest. So don't do that. Just one query, I guess it will be covered in future, but just a query. Like when we create like identical VMs in availability zones, can we put it in a manner when the load is high to save money when there is not much load? We can switch off one VM in different zone and just use VM in one zone. Got your So question. when the load is increased, Yes, Henty. Sorry, didn't mean to interrupt you. I think I got your question. I'll answer that. If you still have some further question, you can ask. Anyone else? no, just is there a way to save money? Yeah, I got it. I think I got the question. I will answer it. And still, if you think I haven't got it, you can again elaborate your question. Yes, guys. Anyone else? कुछ और question है किसी के पास? just one silly question है. Actually, availability zone और paired regions में क्या difference है? Silly कुछ भी नहीं होता वसीम भाई. बहुत crucial question है.
पेड रीजन अभी हमने पढ़ा नहीं है ना, व्हाई आर यू वरीड अबाउट इट? डोंट वरी, पेड रीजन जब पढ़ेगा ना तो उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा आपके साथ, डोंट वरी। ठीक है, फिलहाल लेट्स फोकस ऑन अवेलेबिलिटी जोन, बट नॉट एट ऑल अ सिली क्वेश्चन। ठीक है, सो लेट मी आंसर हेंटिस क्वेश्चन फर्स्ट। एंड जब पेड रीजन हम पढ़ते हैं यू विल गेट योर आंसर। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। क्या डिफरेंस है? जब आई विल एक्सप्लेन पेड रीजन, यू ऑलरेडी नो अवेलेबिलिटी जोन, आपको ऐसे आपका आंसर वैसे ही मिल जाएगा। So if you don't get it, Wasim bhai, you could again ask the question. So Yeah, sure, answering sure. Henty's question, guys, did you get what is he asking? What Henty is asking? He is asking that is there any way, let's say that I am using, this is my Pune region. Example, this has availability zone, or let's say it's East US. Now let's stop taking dummy examples. We'll go ahead with what exactly it is there. So East US has availability zone feature. Under East US, there are 3 data centers. For one application, I have 5 servers. I need 5 servers. It could be back end, front end, सब मिला के मैं बता रहा हूँ 5 सर्वर मुझको एक application के लिए चाहिए, right? So I decided to use availability zone feature. So what does it mean? My first server will go here. My second will go here. This is just a copy. My third will go here, and my fourth will go here, and fifth is going here. Guys, is it the correct case when I say my one application needs 5 servers and I want to use availability zone? So the diagram which I have created, is it correct diagram? I hope you guys got my question. Anyone did not understand the question, ask me to repeat, I'll do that. Try to answer it. Try to understand the question and answer it, because interview में आप लोगों को scenario आने वाले हैं, so you'll have to understand, and if you don't understand you'll have to probe. So my question is, again I'm repeating, okay, if you don't, then what should be the correct ideal situation? Whoever There answered should be that. 5 servers on each zone, right? Who's that? Yes, correct. So this is not what I meant, guys. When I say I require 5 servers for one application, it does not mean कि मेरा एक सर्वर यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा ये, चौथा यहाँ पर, पांचवा यहाँ पर. इसका मतलब क्या है? इस पांचों सर्वर को मिलाकर मेरा एप्लीकेशन चल रहा है. But if something goes down, अगर ये एक भी चला जाता है, तो where is the redundancy then? Right? You will have 5 server on 2 or 3 zones, correct? So in this case, if I've said that I'm using 3 zones, so on all 3 zones, okay? So yes, whoever answered, that is correct, guys. So server 1 here, server 2 here, server 3 here, then 4 here, 5 here, 6 यहाँ पर. मतलब एक रफ कैलकुलेशन कर लो कि अगर एक इसमें 5 लग रहे हैं तो टोटल आपको 15 सर्वर्स लगने वाले हैं. अकॉर्डिंगली आप उसको डिवाइड कर दो. कितने हो गए? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. This is East US. We are using availability zone. This is zone 1. This is zone 2. This is zone 3. And this is an application which needs 5 servers. So this should be the ideal case. Is it correct, guys? Are you getting it? Yes. Okay. Now, Henty's question is that why should I run all 15 servers? Is there a way that I can shut down these servers and only turn them on? He did not exactly mention these words. I'm elaborating the question. What he meant to ask, what I understood. Henty, you can correct me if I'm wrong. So what he wanted to understand is that why should I pay for 15 servers? Can I not shut it down and this one also and just use these servers and only turn these servers on when there is something wrong with this one? Okay, अगर ये डाउन होता है तभी ये सर्वर्स अप होने चाहिए. Is that correct, Niti? Did I get your question correctly? Yes, yes, absolutely. Okay, guys, did you understand the question? Yes. Right. So yes, guys, there is a way, and this is the only sorry, this is the only method, or I would say this is the only aim we are trying to achieve. When I say that there is an availability zone and all 15 servers are running at a time, it doesn't make any sense. पूरे 15 को चला के आप वैसे भी क्या कर लोगे, right? So whatever we are reading now, availability zone, availability set, ये सब जो है हम आइसोलेशन में पढ़ रहे हैं. इसको टेक्निकल सोल्यूशन कैसे बनाना है, इसके लिए हम इसको कॉम्बिनेशन में बाद में पढ़ेंगे. इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? अवेलेबिलिटी सेट है, देन वर्चुअल मशीन स्केल सेट है,
then there is a load balancer. It's okay if you're not getting it, guys. ये बस सब मैं बाद में explain करने वाला हूँ. Ignore the spelling, please. Then there's a load balancer. Then there's DNS. ये सब जो है ना front end है इनके. Even if I'm using 3 of them, इनमें से कोई एक मैं front end use करता हूँ. Sorry. Okay, so let me tell you guys. चलो अगर इसको आप ignore भी करते हो, even if I'm running all 15 servers at a time, right? I'm running 15 servers. What is my requirement? 5 servers. I'm explaining the case. Hear it out properly. If you do not understand, stop me and ask. Do not wait पूरा complete होने तक, ठीक है? Forget this one. अब example के लिए मैं single zone में ही ले रहा हूँ. 5 servers है मेरे एक application को चलाने के लिए 5 servers है मेरे पास, right? इसमें एक है मेरा database server. पब्लिक को और मेरे यूजर्स को इससे कोई मतलब नहीं है. इसका आईपी क्या है, दे डू नॉट केयर, ठीक है? दे डू नॉट नीड टू नो, कोई मतलब नहीं है उनको. ये है मेरा बैकएंड सर्वर. इससे भी उनको कोई मतलब नहीं है कि बैकएंड में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. दे डू नॉट. जैसा स्विगी के बैकएंड में क्या है, डेटाबेस में क्या, डू यू एवर वरी? आप लोगों को कोई चिंता है क्या उसकी, क्या उसका आईपी एड्रेस क्या है? यू नेवर केयर अबाउट इट, राइट? उसी तरह से ये है, सपोज मेरा कोई बैकएंड हो गया, ये हुआ मेरा इंजन सर्वर. Ignore the spellings, guys, please. And then maybe one I have as my backup server. Backup and backend, these are two different things, guys. Do not confuse. किसी भी तरह से, but ये चारों servers से मेरे application से मेरे users को, they have nothing to do with this. These are required components. Obviously, we need it to run an application. But इसका IP क्या है, इसकी connectivity कैसी है? My user is not worried about it. He's only worried about one server, which is my front end server, जिसका IP मैं share करने वाला हूँ. This is my front end server. This is my front end server. इसके ऊपर मैं कोई IP दूंगा. Maybe could anyone quickly give me a public IP? Let me see if you guys remember this. A public IP. Class A public IP or class B public IP. Anyone? Quickly, guys. 12.10.15.0. 15 dot? Yeah, sorry, 5. Right. 5. By the way, I hope you guys understand कि वो जो usable IPs वगैरह वाला फंडा है वो public IP में नहीं use होता है, right? I hope you everyone knows that. Because public IP का हम कभी netting वगैरह करते ही नहीं है. So if I check this one, let's see if this is a legit IP कोई use कर भी रहा है क्या? First, we'll see that. So I think no one is using that IP. It is empty. It is available. Even if it wasn't, हम लोगों को अभी वैसा चाहिए नहीं था available IP. I was just showing you the details. So this is the application. अब किसी application को अगर आपको use करना है, be it in your Android phone, iOS phone, browser पे हो, किसी भी browser पे कहीं पर भी over the internet अगर आपको कोई use करना है, so what is the requirement over the internet use करने के लिए? A public IP is the requirement to use your application over the internet, right? तो यहाँ पर मेरे एप्लीकेशन का नाम है लेट्स से स्विगी. एग्जांपल के लिए हम ले रहे हैं स्विगी. यहाँ पे लोग खाना वगैरह ऑर्डर करते हैं, ठीक है? पीपल विल टाइप swiggy.com, बट बैकएंड में क्या होगा, कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, राइट? वी डिस्कस दिस ऑन डे 1. बैकएंड में कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा. फॉर एग्जांपल हियर इफ आई टाइप स्विगी, दिस इज जस्ट फॉर मी टू रिमेंबर, फॉर ह्यूमंस टू रिमेंबर कि स्विगी ऐसा कुछ है. बट बैकएंड में क्या चला है, इसके एक आईपी एड्रेस चला है, ठीक है? इफ आई चेक दिस, इफ आई ट्राई टू पिंग स्विगी, HTTP protocol will not take here, so I'll simply just ping Swiggy. So if you guys see, sorry, ये reachable वाले को छोड़ दो, ये क्यों नहीं हो रहा? We'll discuss that later. 5277.6.249. This is the actual thing which is working. Swiggy.com, it is just a name for people to remember. Backend में क्या चल रहा है? कोई IP address चल रहा है. If you see, if I go with using that IP, I will again go to swiggy.com.
इज इट क्लियर गाइस टिल हियर? यहाँ पर कि आपको अगर कोई एप्लीकेशन चलाना है, किसी को देना है, सो इट रिक्वायर्स अ फेस जिसको आप दे पाओगे। जो एप्लीकेशन भी होता है वो अल्टीमेटली आपको आईपी पे ही कनेक्ट करता है, जो फोन में आप यूज करते हो वो भी आईपी पे ही कनेक्ट करता है। आर यू गाइस गेटिंग इट? यहाँ तक क्लियर है? आई एम स्टिल डिस्कसिंग Yes. हेंटीज क्वेश्चन, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि वो विच हेंटी इज आस्किंग कि इसको हम बंद कर सकते हैं। व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? इट इज मस्ट। अगर आपको पैसों की फिक्र नहीं भी होती, स्टिल यू विल रिक्वायर्ड। Why that? Why is that? I'll let you know. Okay, so now people have this one 20.10.15.5 swiggy.com they have. Now if I decide not to use any one of these and I'm using, what am I using now? I'm using availability zone. Data is replicating here, data is replicating here, and data is replicating here. if db का इस पे जा रहा है, बैकएंड इस पे जा रहा है, फ्रंट एंड सब कुछ एक साथ replicated है, everything is fine. And this zone goes down. यहाँ पर आपका फ्लड आ गया, this goes down. आपका सारा डेटा, सारा एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है यहाँ पर, मतलब रेडी टू सर्व है। बट कैन वी यूज अ डुप्लीकेट आईपी? पब्लिक आईपी अगर मैंने इसको असाइन कर रखा है, कैन आई यूज द सेम आईपी हियर? यस गाइस, कैन वी रिपीट पब्लिक आईपी? गाइस यस, नो, मे बी स्लीपिंग, क्या हुआ? इतना भी बोरिंग टॉपिक नहीं है यार। No, no, sir. There should be a way, right? श्योर, मतलब इतना सारा कंफ्यूजन क्यों है? पब्लिक आईपी कैन नॉट बी रिपीटेड, राइट? Yes. आई होप यू गाइस आर लिसनिंग। Yes. Yeah, yes. इट्स जस्ट थर्सडे, फ्राइडे भी नहीं Yes, हुआ अब sir. तक तो। राइट, सो पब्लिक आईपी कैन नॉट बी रिपीटेड। इसका मतलब मैंने सबको क्या दे रखा है? swiggy.com दे रखा है। उनके डीएनएस में क्या रिकॉर्ड है? ये सब है स्विगी पे 12.10.15.5। मतलब whoever is using swiggy.com they are connecting to this IP and this IP cannot be repeated at the same time। मैं इस IP को यहाँ पर भी और यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ, that is not possible। so if this data center goes down, this zone goes down, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर के मेरे सारे सर्वर भी डाउन हो गए। इट मींस ये सर्वर भी डाउन हो गया, ये सर्वर भी डाउन हो गया, और ये एप्लीकेशन सर्वर जो है मेरा फ्रंट एंड, ये भी डाउन हो गया। तो आई हैव अ बैकअप, कंटिन्यूस रेप्लिकेशन हो रहा था, तो जैसे ही डाउन हुआ ना, 1 मिनट पहले तक का भी बैकअप मेरे पास है यहाँ पर। इनफैक्ट जो ऑर्डर इन प्रोग्रेस था, देयर आर मेथड्स, देयर आर टेक्नोलॉजीज, विल डिस्कस देम लेटर, कि इन प्रोग्रेस ट्रांजैक्शन भी आपका कैंसिल नहीं होता है। द मोमेंट दिस इज डाउन, आपका इन प्रोग्रेस ट्रांजैक्शन भी यहाँ पर आ गया है, सब कुछ यहाँ पर एज इट इज है, डेटा जीरो लॉस है डेटा का। बट द क्वेश्चन इज हाउ विल पब्लिक नो कि इस पे कनेक्ट करना है फिर से? हाउ विल यू नो दैट? इसके ऊपर तो कोई और आईपी होगा, राइट? इट विल हैव सम अदर आईपी। So now, do you expect all of your users to remember multiple IPs? Do you want them to go and refresh your IP and then select it? And how will they know? यहाँ इस केस में हम एक की बात कर रहे हैं, let's say यहाँ पर एक होता। अब आप क्या चाहते हो कि आपके ये जो है 3 IPs याद रखें? और ये तो एक छोटा सेटअप हुआ, बड़े सेटअप में मल्टीपल जोन्स हो गए, बहुत कुछ ज्यादा चीज होगी। सो डू यू एक्सपेक्ट योर यूजर्स टू डू दैट? एंड डू यू थिंक इट इज अ यूजर फ्रेंडली एक्सपीरियंस? अगर मेरे साथ ऐसे हो रहा है बार बार स्विगी पे कि एप्लीकेशन अगर उनके यहाँ कुछ डाउन होता है तो मुझको पूरा आईपी चेंज करना पड़ता है, इज इट सम यूजफुल फॉर मी एज एन एंड यूजर? आई विल से क्या कोई मतलब ही नहीं यार इस ऐप का, लेट्स रिमूव इट, लेट्स अनइंस्टॉल इट, इट्स अ क्रैप ऐप, राइट? आर यू गेटिंग इट कि इनको मैं अलग अलग क्यों नहीं यूज कर सकता हूँ? Yes. So this will always be your backend. To deal with this, you will have to use a front end कि इनको पीछे रख के आपको एक नया फेस जो है ये करना पड़ेगा। So that face could be either VMSS, could be load balancer, or could be DNS. And when we use that, what happens here कि यहाँ पर हम उस फेस को अप्लाई करते हैं, it will have one public IP, single public IP. This is the public IP your user will have, and this is never going down. Why? Because this is not a machine and this is not a region specific. इसके लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है, ये रीजन डाउन भी हो जाए तो वो आईपी वहीं पर है। And then what this IP does is it segregates the request or redirect them. ये इस तरह से रिक्वेस्ट को डिवाइड करता है कि एक रिक्वेस्ट यहाँ भेज दिया, एक यहाँ पर भेज दिया, एक यहाँ पर भेज दिया,
एक यहाँ पर भेज दिया. So even if this goes down, what will this IP will do? यहाँ पर इन दोनों में डिवाइड करना शुरू कर देगा. This is one feature. Another feature we could have here कि ये दोनों को पहले ही बंद रखो, सारी रिक्वेस्ट को यहाँ पर भेजो, and the moment this is down, तो इसको अप करके रिक्वेस्ट को यहाँ पर भेजो. So this is to answer Hanti's question. So it is possible. It is definitely possible and we'll try to do that. वो सब कैसे होता है, उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हम क्या लगाएंगे, क्या कंडीशंस लगाएंगे कि इट्स नॉट ओनली टर्न ऑफ, ये भी अगर हो सकता है ना कि मेरा इस वाले इस पे सीपीयू अगर 90% से ज्यादा चला गया तब इस मशीन को ऑन करना. वी कुड हैव दोस कंडीशंस आल्सो एंड वी विल डू दैट. उसके प्रैक्टिकल्स भी हम करने वाले हैं. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो. उसके बिना तो क्लाउड का कोई मजा ही नहीं है. So you could achieve that, you will have to do that. It is not an optional thing. Is it clear guys अब तक? Yes. हाँ, ये सब कैसे करेंगे, व्हाट इज VMSS, लोड बैलेंसर क्या है, DNS क्या है, डिफरेंसेस क्या है इनमें, विल सी दैट. जब वो टॉपिक आएगा दैट टाइम विल सी इट. सो आई होप this is clear to you guys. Availability zone, it is very much clear to you guys, right? Yes. Anyone has any questions? Go through it. So guys, I think you do not have any questions. So let's start with the next topic. Wasim bhai, this we will read later as your region, paired region, because it has something to do with storage. तो पहले storage explain करूंगा और उसके बाद, but somehow इसी line पे है ये. I told you guys yesterday that I will be using one word very frequently, which is HA. Who could tell me the full form of HA? What is HA? High availability. What do you High understand by that? availability. I have. Yes, what do you understand by that? Uptime should be high. Like it shouldn't. राइट कोई एप्लीकेशन का डाउन टाइम बहुत मिनिमम होना चाहिए, कम से कम सेकेंड्स में, उससे भी ज्यादा कम. ठीक है. सो ये भी उसी का एक पार्ट है. लाइक वी आर डिस्कसिंग हियर कि कोई मशीन डाउन होता है तो वो दूसरा अवेलेबिलिटी जोन होना चाहिए, वहां पर अप हो जाना चाहिए, सब वी आर डिस्कसिंग. सेम स्टोरेज के लिए भी कुछ ना कुछ बैकअप वगैरह होता है हमारे पास, रिडंडेंसी होती है. तब वी विल लर्न अबाउट द Azure रीजन पेयर. ये रीजन लेवल पे भी ये करता है कि पूरा रीजन डाउन है देन क्या होना चाहिए. As of now we just discussed availability zone के एक रीजन में जोन अगर डाउन है तो क्या होगा, रीजन डाउन है तब क्या होगा, that we will also learn, वो उसको बाद में करते हैं. First let's talk about AV set, availability set. So let's start with this. थोड़ा सा confusion वाला टॉपिक है. So if you do not understand guys, let me know. I have already explained, आप लोगों को मैंने डेटा सेंटर वगैरह सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, बट आई एम स्टिल गोइंग अहेड एंड शोइंग यू द पिक्चर्स ऑफ डेटा सेंटर because that is related to this topic. Before that, let's go through this once. Anyone would like to volunteer and read this for me? Okay, what is fault domain, what is availability set, यहाँ से लेकर यहाँ तक, till here, till available. Yes. Anyone guys, please.
I'll do that. Sure. So availability set, it has multiple racks. Every rack will have individual power supply and network supply. Racks will have multiple slots. Update domain, logical set, planned activity. I don't know how to read this. Yeah, I'm just reading it bluntly. And this fault domain, set of rack. Unplanned issues, for unplanned issues. Okay. Do you want me to go ahead? Yes, please. Definition: fault domain and update domain. Okay. So yeah, the definition, an availability zone is a combination of a fault domain and update domain. In below example, we have 3 fault domains and 3 update domains. If any fault occurs at any availability zone, like power failure, only one VM will not be available. We will still have our VM from the fault domain 2 and 3. Similarly, if there is any update on the zones, we will have other update domains available. Thank you, Chetan. Okay, guys. So I hope you guys were able to capture few jargons at least, because we have discussed them and they weren't alien to you. When I say rack, what do you mean by rack? Who could tell me? With respect to data center, guys. It's a physical setup wherein servers are racked Right. with networking and power. Right. So then network supply. What do you understand by network supply? Internet connectivity. ISPs, right. I hope power supply किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी, सबको पता होगा क्या होता है power supply. Okay, so I hope you got these details. Still, I'm showing one picture to you. Vishal, are you getting this? I think in last time also you were here till this topic. So are you getting it? Yes, well. So let's have a look at the rack first, and then we'll come back to this. By the way, guys, what are we reading? I explained it yesterday. First, we read availability zone. What does it mean? That if in a region, if in this region, in this region, if it supports availability set of availability zone, then I do have an option to have my one server here, one server here, one here for the same application, same server, exact replica or exact copy. So if anything goes down with this one, anything goes wrong with this one, I will be getting my services from here. If anything goes down here, I'll be getting my services from here. So this is availability zone. But do we have availability zone in all regions? No. No. And let's say for some reason, for some compliance reason, or maybe budget reason, or for maybe without reason, your user, your client is admin and he wants to use one region which doesn't have availability zone, and he still want HA. So what will you do? Will you tell him that there's no HA for you people? Can you do that? No, you cannot. Why? Because we have. Right. So when we talk about a region with one, this one, so this is how it looks. Ignore the drawing, guys. Not good at arts, right? So this is how it will look. ये आपका एक region हो गया. It will have only one availability set or zone. You'll say. एक ही data center होगा इसमें. ठीक है. अब इसमें इसको आप किसी तरह की redundancy दे सकते हो क्या? एक ही data center है तो किस तरह की redundancy दे सकते हो? So that we are discussing in availability set. ठीक है. So let's say that. So this is what we are talking about, guys. ये एक data center है. Data center में इतने सारे racks लगे हैं और racks के अंदर आपके servers installed है. I hope you guys can see, right? ये है, ये सब है. So now if I have an application, same example, one application, 5 servers are needed, but I still want some redundancy. And the region I have selected, there I do not have availability zone, or I do not have budget for that. ठीक है. Because it's not only server, guys. Understand one thing. When I say one region with availability zone, which means 1,
2, and 3, 5 servers each. Five servers each. So here I'm paying for 15 servers, but it's not only 15 servers, but you are also paying for the replication. यहाँ से जो यहाँ data जाता है, यहाँ से यहाँ पर जो data जाएगा, यहाँ से यहाँ पर जो data जाएगा, you're paying for that also. Understand that thing well. This is availability zone. वहां पर आप ये भी कर रहे हो, ठीक है? इसमें cost cutting अगर चाहिए किसी को, तो he can go for availability set. 15 servers का तो यहाँ पर भी pay करेगा. But what about synchronization? Data synchronization is a costliest thing, one of the costliest thing. So let's take this example. ये दिख रहे हैं आप लोगों को, these are the racks. इसके अंदर ये जो लगे हैं ये है servers. Physical server है, इसके ऊपर आपका virtual machine आता है. We have cleared that. Anyone has any questions related to physical and virtual machine? No. Yes guys, anyone? नहीं है, right? So I hope you understand कि ये जो दिख रहा है ये एक फिजिकल सर्वर है और इसके ऊपर 10 वर्चुअल मशीन्स हो सकती है, जिसमें से 1 कुड बी माइन, बाकी किसी और की भी हो सकती है, 2 कुड बी माइन, बाकी किसी और की हो सकती है. सो दिस इज द सेटअप वी हैव नाउ. अब फॉल्ट डोमेन और अपडेट डोमेन में क्या कर रहे हैं ये लोग, विल एक्सप्लेन दैट इन डिटेल, बट लेट मी क्विकली जस्ट गिव यू अ ब्रीफ. इंस्टेड ऑफ डिफरेंट डेटा सेंटर, व्हाट आर दे डूइंग इज दे आर डिवाइडिंग कि ये 3 रैक जो है ये एक सेट का हिस्सा हो गया, ये 3 रैक एक अलग सेट का हिस्सा हो गया, और ये 3 रैक एक अलग सेट का हिस्सा हो गया. I hope you guys are getting it. Now the same thing, dividation of server, 1 application, 5 servers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Clear guys till here? Yeah. Okay. Now how will this help? If my complete data center goes down, कोई flood आ गया, कोई बाढ़ आ गया, पूरा data center down है, then is it helping me? Is this one helping me? No, it is not. But कितनी बार होता है ऐसा? मेरा उतना क्रूशियल एप्लीकेशन है ही नहीं, फेस ऐप वाला एप्लीकेशन है. बाढ़ आएगी तो क्या हो जाएगा कि मेरे 4 यूजर्स फेस ऐप ना कर पाए? उतना क्रूशियल एप्लीकेशन है ही नहीं मेरा. हाँ, बस एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाना एक गेम है, इसलिए मुझको थोड़ा अप टाइम चाहिए, इसलिए मुझको अप टाइम भी चाहिए, बट इतना भी नहीं चाहिए कि जिसके लिए मैं इतना पे करूँ और अननेसेसरी का इतना हैसल करूँ, राइट? So this is not going to help in that case. Then in which case this is going to help? So now let me explain it to you. I have already done that. कि एक जो डेटा सेंटर होता है ना, उसमें एक चीज कभी नहीं होती है. If this is the data center, तो यहाँ पर पावर सप्लाई आया होगा रिलायंस से एक, टाटा से एक, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक, और या फिर किसी भी वेंडर से. इन शॉर्ट 3 पावर सप्लाई. आईएसपी आया होगा जियो से एक, एयरटेल से एक, और एक कोई लोकल या वहां का कोई भी समझ लीजिए हैथवे वगैरह, यहाँ से एक. So they have divided these racks. मतलब इस रैक से जो है ये कनेक्टेड होगा टाटा वाला, और ये रैक जो है इससे कनेक्टेड होगा, ये रैक इससे कनेक्टेड होगा. So if something goes wrong within data center, और या फिर बाहर से, let's say कि टाटा की लाइट चली गई, इससे क्या हो रहा है, ये जिससे जुड़ा हुआ है ये रैक पूरा, इसमें जितने भी सर्वर्स है सारे बंद हो जाएंगे, राइट? And the moment this is shut down, इस पे जो अकेले सर्वर चल रहे थे उनकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी. But in this case, other rack is available. So you will get your services from here. Is it clear, guys? Are you getting it? Any confusion? Yes, guys. Anyone has any confusion? Okay, but if you're saying something, I can't hear you. Clear. No issues. What about others? Is it clear? Yes. Okay. अब इसमें Yes. 2 और टर्म थे. One is fault domain, the other one is update domain. Now let's try to understand that. What is fault domain and what is update domain? What do you understand, guys? When I say fault domain or fault, what do you understand by fault? What is a fault according to you? In this scenario, what could be a fault?
Okay guys, we'll come back. It is about to finish. 1 minute से भी कम रह गया है. I'm closing the session. We'll be back at 16:45 sharp. Same link.